मई जून 19 है, वेरिएंट 33 है। द क्वेश्चन इन प्रैक्टिस हमारे पास कौन सा है? स्ट्रेटेजिक चॉइस। अब तक हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट देख चुके हैं, कंटिजेंसी प्लान देख चुके हैं, तुम्हारे साथ नहीं देखा मैंने, लेकिन अपलोड किया हुआ है, एनालिसिस हमने देख लिया है। चॉइस आज देखते हैं, पहले बुलेट पॉइंट्स बनाएंगे केस स्टडी से और फिर मूव ऑन करेंगे आंसर के ऊपर, ठीक है? तो पहला पेपर है हमारे पास अफ्रीको चॉकलेट्स। एसी इज अ फैमिली बिजनेस। पहली बात क्या है? फैमिली बिजनेस है। बुलेट पॉइंट बना लो। क्या बना लो? बुलेट पॉइंट बना लो। क्या है? फैमिली बिजनेस है। कौन सा बिजनेस है? फैमिली बिजनेस है। हाईलाइट कर लो। ना 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 ना, लीगल स्ट्रक्चर नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कौन सा बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। बेस्ड इन एन अफ्रीकन कंट्री, ये बात हाईलाइट हो गई। कौन सा कंट्री है? अफ्रीकन कंट्री है। हाँ बिल्कुल लिखना है। अब बता रहा है कि एसी इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। कौन सा बिजनेस है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, owned and managed by the Lukwesa family. We started the business over 50 years ago. Well established और पुराना business। एक पॉइंटर अपने पास ये नोट डाउन कर लो, it is an established business. AC produces what? Chocolate powder using cocoa beans sourced from local farms in its home countries. यानी चॉकलेट पाउडर प्रोड्यूस करती है, which means somewhat ये सेकेंडरी सेक्टर बिजनेस नजर आ रहा है मुझे। कौन सा? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस नजर आ रहा है। Which is world famous for the quality of its cocoa beans. यानी अफ्रीका फेमस है कोको के लिए। AC has expanded steadily over the years, financed by retained profits and bank borrowings. यानी इंटरनल सोर्स भी इस्तेमाल करी है, एक्सटर्नल भी इस्तेमाल करी है। AC's profit have remained steady, giving the family shareholders a good return. यानी अच्छा कमा भी रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है फिलहाल। Processing of the cocoa beans into chocolate powder takes place at two factories which are 300 kilometers apart. दो फैक्ट्रीज हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 300 किलोमीटर का। फैक्ट्री एस इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ द कंट्री नियर द कैपिटल सिटी एंड द कोस्ट। यानी ये जो एस फैक्ट्री एस है वो साउथ में, और अपना वो किधर है? कैपिटल सिटी के पास है और समंदर के पास है। फैक्ट्री एन नॉर्थ में, ये बॉर्डर के करीब है। बोथ फैक्ट्रीज हैव फुल teams of production managers and employees, but administration, finance and marketing are based in offices at factory S. यानी फैक्ट्री एन के पास एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और मार्केटिंग नहीं है। वो सब लोग कहां बैठे हैं? फैक्ट्री एस पे बैठ के सब चीजें कंट्रोल कर रहे हैं उसके पास। हाँ, AC's chocolate powder is sold in bulk to business customers. यानी इसकी अप्रोच क्या है? It is working on the B2B model. कौन से मॉडल पे? ये B2B मॉडल पे, which are well-known chocolate companies around the world. These companies carry out final manufacturing, transforming chocolate powder into their own branded mass market and luxury chocolate products for consumers. Any mass market luxury chocolate producers. AC has excellent relationships with its customers who value the company's punctuality of supply and consistent product quality. तो यहाँ पर स्ट्रेंथ्स क्या आ रही है बिजनेस की? एनालिसिस हमसे मांगा नहीं है, स्ट्रेंथ्स लिखो। नहीं, आप वो भी आएगी, लेकिन स्ट्रेंथ्स में आगे एरो बना के लिखो। दो स्ट्रेंथ्स आ रही हैं, वो क्या है? पंक्चुअलिटी एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब है टाइमली डिलीवरीज होती है, एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी टाइम पे, यानी सही क्वालिटी सही प्रोडक्ट देते हैं, फॉल्टी प्रोडक्ट नहीं होता। क्वालिटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज एनीथिंग व्हिच इज एक्सेप्टेबल और डिजायरेबल बाय द कस्टमर। आगे देखते हैं ना, लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर दो मेन चीजें क्या है? पंक्चुअलिटी और क्वालिटी। मार्केटिंग की बात करते हैं। AC adopts fair trade principles. क्या है ये? This means they pay farmers a guaranteed agreed price for their crops. यानी क्या चीज मेंशन हो रही है यहाँ पर? Ethical business practices. क्या चीज है? Ethical business practices, which is often higher than the current market price for cocoa beans. AC also pays its own employees more than the legal minimum wage. Legal minimum wage से भी ऊपर पे कर रहे हैं। बिल्कुल, मोटिवेशन है या नहीं ये नहीं पता। अब ये एथिकल प्रैक्टिसेस सारी कर रहे हैं। दूसरी बात, the Lukwesa family believes that fair trade is an important ethical marketing advantage for their company. अब ये बात आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि दैट इसका फायदा भी हो रहा है। आगे क्या है हमारे पास? AC's business customers are then able to use the fair trade label on their final chocolate product and charge a higher price to consumers. यानी वही बात है, क्या प्रीमियम प्राइसिंग हो रही है? क्या हो रही है? प्रीमियम प्राइसिंग हो रही है और ये यूनिक सेलिंग पॉइंट इस्तेमाल हो रहा है। Although the global demand for fair trade chocolate is increasing, the chocolate market is becoming much more competitive.
अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ पोर्टर्स 5 फोर्सेस, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, पोर्टर्स 5 फोर्सेस अगर मैं यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ तो कंपटीशन इज हाई इन द मार्केट। कंपटीशन क्या है? हाई है। नोट डाउन करो इसे। इकोनॉमिक एंड लीगल चेंजेस। The economy in AC's home country is developing and growing at a fast rate. Economic growth है। क्या है? Economic growth है। टेस्ट के साथ लिंक करोगे इसको, इकोनॉमिकल फैक्टर्स के साथ। The level of employment is increasing and the government has introduced new laws to protect employees. Legal changes भी आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? Legal changes भी आ रहे हैं, economical changes भी आ रहे हैं। All workers now have a right to sick pay and a contract employment. The daily minimum wage has also been increased by 10%. याद रखना that the Lukwesa family and the AC business was already paying their workers a higher minimum wage. Minimum wage से ऊपर पे कर रहे हैं। तो अब बात यहाँ पर यह आ रही है that already गवर्नमेंट ने वापस 10% का इंक्रीज किया, तो इनके वर्कर्स डिमांड करेंगे कि पहले जब हमें ज्यादा मिल रहा था तो अब भी हमें ज्यादा दो। So there is a chance of increase in the cost of production. नोट कर लो। The government is keen to support business development and reduce the tax on company profits by 2% this year. Taxes reduce हो रहे हैं, तो कौन सी पॉलिसी है? Fiscal expansionary policy. कौन सी पॉलिसी है? Fiscal expansionary policy है। Current and forecast economic data is shown in Appendix 1. Appendix 1 पे आएंगे तो उसको हम analyze करेंगे। New management and new ideas. Ali Lukwesa has recently taken over as managing director of the business. Ali is ambitious and determined to reorganize and modernize the company. He would like to raise the business profile of AC and take advantage of opportunities presented by the fast-growing world demand for chocolate products. SWOT opportunity है that chocolate products की demand क्या हो रही है? बढ़ रही है। Opportunity की बात आ रही है यहाँ पर। Market, हाँ? SWOT, strength, weaknesses, opportunities, threats. Ali is considering closing factory N. Factory N क्या कर दो? बंद कर दो, जो नॉर्थ साइड पे। हाँ, and centralizing all functions in factory S, which has land available for expansion. उसके पास land available है, उसी को expand कर दो। The factory N site could be sold for 1.5 million. This will cover the redundancy cost. जाहिर सी बात है, जब वर्कर्स की जरूरत नहीं है और उनको फारिग करोगे तो redundancy payments देनी पड़ेगी। And contribute to the factory S expansion. AC will need to borrow 7 million to finance the project. अब 1.5 million वहां से मिलेंगे, जैसे redundancy cost वगैरह पेमेंट वगैरह हो जाएगी, लेकिन जब फैक्ट्री S को एक्सपैंड करना है तो कितने चाहिए होंगे? 7 मिलियन चाहिए होंगे। क्या इतना पैसा हमारे पास है? हम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं? अभी क्लियर नहीं, अभी आगे देखेंगे, आ जाएगा। अब इसमें करना क्या होगा? इंक्लूडिंग अपडेटिंग मशीनरी, मॉडर्नाइजिंग द फैसिलिटी. AC's operations and human resource directors are opposed to this plan. Ali has forecast that the overall impact on capital employed will be to increase it by 8 million. ठीक है, अगर हम ये चीजें करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 8 मिलियन से बढ़ जाएगा। नीचे हमें डेटा दिया हुआ है, यहाँ पर कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होगी, वो हम बाद में देख लेंगे। मसला आ गया कोको बीन की सप्लाई का। क्या मसला है? Ali would like to expand AC's chocolate powder production. However, AC companies with other chocolate processors for the supply of cocoa beans. क्या बोल रहा है? Ali would like to expand AC's chocolate powder production. However, AC competes with other chocolate processors for the supply of cocoa beans. मसला ये आ रहा है कि जो है ना कोको बीन्स की जो सप्लाई है वो क्या है? लिमिटेड है। तो और लोगों को भी तो सप्लाई चाहिए, तो इनके पास एक लिमिटेड सप्लाई आ रही है। अगर एक्सपैंड कर भी लें, रॉ मटेरियल आएगा नहीं तो क्या करेंगे बैठ के? हाँ, देखते हैं क्या होता है। Cocoa beans prices are driven by global supply and demand factors. AC has been forced to increase the price it pays to farmers by 15%. Already अच्छे दे रहे थे, अब 15% और बढ़ानी पड़ रही है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। AC's production director has also been investigating new supplies of cocoa bean from neighboring countries. क्या आसपास से ले आए? अगर अफ्रीका में नहीं मिल रहा, महंगा मिल रहा है। But there are doubts about the quality and reliability of the supply. क्वालिटी इनका क्या है? यूएसपी है, इनकी स्ट्रेंथ है। मसला आया तो इशू हो सकता है। However, many farmers in AC's home country are now planting cocoa bean bushes, hoping to gain from the current high prices. अब प्राइसेस बढ़ तो गई है, तो फार्मर्स ने भी ज्यादा बुशेस लगाना स्टार्ट, लेकिन भाई क्रॉप है, टाइम लगेगा ग्रो होने पे। ऐसा नहीं कि आज लगाया तो कल सप्लाई आ जाए।
human resource planning. At present, production and administrative employees at both factories have full-time permanent contracts. ठीक है, क्या है? Full-time permanent contracts. Labor turnover low है, इतना ज्यादा नहीं है. The relationship between the directors and the employee is good. Ali would like to introduce new employment contracts. अब वो change ला रहा है. सब अच्छा चल रहा है. अब क्या change कर रहा है? Senior managers would remain on their existing full-time contracts. Senior managers को नहीं छेड़ रहा. क्या छेड़ रहा है? But all other employees would have a more flexible pattern of work. यानी temporary और part time पे लगाएगा. यानी आप उनसे job security छीन रहे हो. Demotivation आएगी. Efficiency कम होगी. Including more use of temporary and short-term employment contracts. This will enable longer hours of production and operation will respond more quickly to changes in demand. अब ये बोल रहा है कि जब flexible होगा तो they will be able to adapt, लेकिन उसके drawbacks नहीं देख रहा. आगे देखते हैं long term strategic planning जो हमारा question in practice है. Ali is looking to the future. He wants to consider two options for growth. At a recent meeting with his team of directors, Ali said, if we want our company to grow, I believe we need to move with the time. Each of these two options will be expensive. पैसा लगेगा. We will need to make a strategic choice between them. Perhaps AC को बना दो PLC, Public Limited Company. अभी प्राइवेट है ना, PLC बनाओगे, शेयर इशू होगा और पैसा बिजनेस के अंदर आ जाएगा. बिल्कुल. We will need to make changes to our business plan, whichever option we choose. कुछ भी चूज करो, चेंज तो लाना पड़ेगा. ऑप्शन ए क्या है? Start production of an AC branded range of luxury chocolate products. मेरे भाई वो पहले क्या करता था? सिर्फ चॉकलेट पाउडर प्रोवाइड करता था. अब बोल रहा है कि खुद अपना चॉकलेट बनाओ. ठीक, यानी बीच वाले जो इंटरमीडिएरी उसको स्किप करो. हाँ. These would be aimed at the increasing number of middle and high income consumers in AC's home country. The product could be sold through supermarkets. AC would also consider exporting the chocolate. पहला ऑप्शन तो ये. लेकिन एक बात याद रखो, करेंटली इसके बाद इस तरह की प्रोडक्शन का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है और मार्केट में ऑलरेडी बड़े बड़े कंपेटिटर्स बैठे हैं और सप्लाई पीछे से भी लिमिटेड है. ऑप्शन बी क्या है? Secure future supplies of cocoa bean for the company by purchasing of a large farm in AC's home country. This would be cultivated to grow cocoa beans with the first crop expected after 3 years. फिर भी 3 साल लगेंगे. अब ये यहाँ पर क्या है? वर्टिकल बैकवर्ड है. क्या है? और वो ऊपर वाला वर्टिकल फॉरवर्ड की तरफ नजर आ रहा था. Surplus cocoa beans could also be sold to other companies. Ali asked his directors to carry out research into the market and cost to help make the strategic choice. और डेटा दिया हुआ है अपेंडिक्स 3 के अंदर. अभी अपेंडिक्स 1 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. अपेंडिक्स 2 को जरा सा देख लेते हैं, इसको भी जाने. आ जाते हैं हम यहाँ पर जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है. ऑप्शन ए 2 मिलियन लगेंगे. फार्म वाला ऑप्शन 1.5 मिलियन, 0.5 कम है. अभी तक दोनों सूरतों में मुझे नहीं पता कि कितना पैसा मेरे पास है, लेकिन शायद बताया है. हाँ, यहाँ पर बताया ना, कैपिटल एम्प्लॉयड 54 मिलियन है. तो आई थिंक 2 मिलियन तक भी अफोर्ड कर सकेगा, मसला नहीं होगा. नॉन करंट लायबिलिटी भी सिर्फ 21 है. ठीक है, 21/54 नहीं, सिर्फ 21 नहीं है, 21/54 करो तो बिजनेस 50% के करीब गेयरिंग पे आ रहा है. तो हालात इतने अच्छे नहीं है. और इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ बताया है इसने हमें. इंटरेस्ट रेट भी क्या हो रहा है? बढ़ने का चांस है. तो जब बढ़ने का चांस है और अगर ये पैसा अगर हम उधार पे लेते हैं तो हमारे लिए फाइनेंशियल बर्डन बन सकता है. बिल्कुल बिल्कुल. इट इज ग्रोइंग बट एट अ डिक्रीजिंग रेट. दूसरा देखो, फैक्ट्री लगाने में, एक्सपेंड करने में, उसको फैक्ट्री के अंदर 1 साल लगेगा चॉकलेट उसकी प्रोडक्शन के अंदर आने में, और उधर 3 साल लगेंगे. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 70% दी हुई है, यहाँ पर 80. तो फेलियर कितना होगा? यहाँ पर 30 और यहाँ पर 20. दूसरा यहाँ पर देखो, एस्टिमेटेड एनुअल इकोनॉमिक रिटर्न तो 0.8% का है, सॉरी 0.8 मिलियन का है, और यहाँ पर 0.6. अब देखो, इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है तो रिटर्न भी कम है. लेकिन आधे मिलियन की इन्वेस्टमेंट कम होने पे सिर्फ 0.1 मिलियन का डिफरेंस है, और यहाँ पर सक्सेस का चांस भी ज्यादा है.
ये तो आप assumption भी आंसर लिखते हैं उसको लेके, वो भी है, वो भी है। दूसरा ये ड्राइविंग फोर्सेस, और मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्स्ट्रेनिंग फोर्सेस, आपको याद होगा फोर्स फील्ड एनालिसिस के अंदर प्रोज एंड कॉन्स। ड्राइविंग फोर्स फील्ड एनालिसिस, ड्राइविंग फोर्सेस क्या होती है प्रोज, और कॉन्स्ट्रेनिंग या रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या होती है कॉन्स। तो इसकी ड्राइविंग फोर्सेस क्या है, अपना ही चॉकलेट पाउडर इस्तेमाल करोगे और अपने फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल होगा, लेकिन आपका एक्सपर्टीज नहीं है। इसकी उसकी फोर्सेस क्या है कि आपके पास एक पक्की सप्लाई आ जाएगी, जो कंपटीशन हो रहा है आप उसको टैकल कर लोगे, और आपके पास प्रॉपर ट्रांसपोर्ट लिंक्स भी है। यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर फार्मिंग की एक्सपर्टीज नहीं। अपॉर्चुनिटीज व्हाट आ गया, ग्रोइंग मार्केट फॉर चॉकलेट प्रोडक्ट्स इन होम कंट्री एंड द वर्ल्ड वाइड, लेकिन थ्रेट क्या है, कंपटीशन बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है, ग्रोइंग डिमांड है कोको बीन्स की, लेकिन वेदर और क्रॉप का कोई भरोसा नहीं है, कब बैकफायर कर जाए। कंपटीशन फ्रॉम वेल नोन बैंक्स ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन। अब सवाल है मेरे पास, discuss the usefulness of strategic choice technique for the directors of AC as they decide between option A and option B। तो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल का फोकस किसके ऊपर है, rather than choosing the different options, हमारा फोकस किस पे होना चाहिए कि टेक्निक्स की यूजफुलनेस क्या है, कौन सी टेक्निक हमें क्या करने में हेल्प करती है और उसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो इसका आंसर लिखते हैं, अभी वो आंसर नहीं है, देखते हैं एक तरफ। अभी लिखवा रहा हूँ ना, आइडिया हो जाएगा इसमें लिखना कैसे, लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, क्वेश्चन ये देख लो, हाँ क्वेश्चन लिख लो ये, यूजफुलनेस ऑफ स्ट्रेटेजिक चॉइस टेक्निक फॉर द डायरेक्टर्स ऑफ एसी as they decide between option A and option Can I start? Yeah. Bismillah. Strategic management. Strategic management is the long term. Strategic management is the long term decision making process. Long term decision making process of a business which involves different steps, which involves different steps which are strategic analysis, choice and implementation, full stop. Next line. Strategic choice is a process in which strategic choice is a process in which the managers evaluate
between, evaluate between different options, between different options, using different techniques, such as the Ansoff's matrix, such as the Ansoff's matrix, such as the Ansoff's matrix, decision tree, force field analysis, and investment appraisal, to evaluate and investment appraisal to evaluate that which particular option is more desirable, हो गया सेकंड पैराग्राफ। अगले पैराग्राफ से लिखते हैं, इंट्रोडक्शन दिया है ना स्ट्रेटेजिक चॉइस का, तो अगले पैराग्राफ से लिखते हैं, आते हैं बताता हूं। ओके, तो अगला पैराग्राफ पे आते हैं। कौन सी टेक्निक से स्टार्ट करें? हाँ, उसके बगैर आंसर नहीं होगा। ओके, लिखते हैं इसका आंसर। अगला पैराग्राफ लिखते हैं, Ansoff's matrix is a product. Ansoff's matrix is a product, market, expansion strategy, which enables the business to evaluate the risk between different options, full stop, as according to the case, option A will be termed as product development, as in the same market we are selling a new product, and the technique can be termed as having medium term risk as AC, medium term risk as AC is already aware of the market, as AC is already aware of the market, full stop. While option B
while option B can be termed as अब देखो ऑप्शन बी इसने ना तीनों नाम लिख दिए यहाँ पर, डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, ठीक है, नहीं वो अलग चीज है, वो यहाँ पर नहीं है। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से लेके चल रहे हो, क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है। तो हमने क्या लाइन लिखी मुस्तफा? while option B can be termed as market development, can चलेगा, can be termed as market development, as the business is planning to enter, as the business is planning to enter the primary sector, the primary sector to supply cocoa beans, to supply cocoa beans, to supply cocoa beans. नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन था कि फार्मिंग में घुस रहेगी, ठीक है, अपनी फैक्ट्री को भी देगा और बाहर भी देगा, ठीक है, हाँ लिखा है टू सप्लाई कोको बीन्स, फुल स्टॉप हो गया। आगे चलते हैं इसके अंदर, दिस स्ट्रैटेजी, नहीं यही, दिस स्ट्रैटेजी will also be a strategy with medium term risk, will also be a strategy with medium term risk. However, in both the techniques, the business does not have the experience, or the knowledge, of the operations they are planning to start. Therefore, the Ansoff's matrix will help AC to evaluate the risk and make decisions accordingly, to make the decisions accordingly. ये चार लाइनें छोड़ दो, अगले पैराग्राफ पर, to make the decisions accordingly. Next paragraph, decision tree is a technique which averages out the expected monetary value, which averages out the expected returns, and tells the business that on average which option will have greater returns,
greater returns. Full stop. As when the two options are compared, as when the two options are compared, as when the two options are compared, option B has 10% more probability of success 10% more probability of success, while the estimated annual return if successful is 0.2 million less 0.2 million less than option A. So if the decision tree is concerned, option B has a greater chance of success, but the returns may be less, while the time set for the projects is that option 1 option A will require 1 year, option A will require 1 year, while option B will require 3 years, and as the business environment is dynamic, and constantly changing, therefore and constantly changing, as the business environment is dynamic and constantly changing, therefore there is a chance that the returns may not be the same as predicted. Full stop. अगला अभी हम ऑप्शंस को फोकस ही नहीं कर रहे, अब हर टेक्निक के बारे में बताने की हमें बताती क्या, उसके फायदे क्या, उसके नुकसान क्या, ठीक है। क्योंकि सवाल ये नहीं बोल रहा कि ऑप्शन चूज करो, सवाल को समझो, सवाल बोल रहा है कि ये टेक्निक्स के फायदे बताओ। क्या बताओ? टेक्निक्स के फायदे बताओ। अगला लिखते हैं, फोर्स फील्ड एनालिसिस। हम दे देंगे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट टूल, लेकिन वो यहाँ पर मेंशन नहीं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फोर्स फील्ड एनालिसिस
is a technique which evaluates the different options on the basis of drivers and restraining factors basis of drivers and restraining factors which help the business to evaluate that which option may be easy to implement while in which they may face difficulties. Easy to implement while in which they may face difficulties. However, the technique is based on the perceptions and the opinions of the person conducting the analysis. Therefore, the results may not always be consistent. As in the particular case, both options have a restraining factor which is lack of expertise which may not enable the business to effectively evaluate that which option should be implemented. वो बाकी है. That which option should be implemented. हाँ पता है. हाँ क्या करें, मजबूरी है. सही है, बस एंडिंग पे आ रहे. लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल is a technique which checks the profitability as well as the desirability of the different options
and provides a quantitative analysis and provides a quantitative analysis which enables the managers to have an effective comparison. However, in the case the data is not provided to evaluate between the different options. Full stop. Conclusion है. नहीं, अब conclusion है. अगला पैराग्राफ. ठीक है. नहीं, अगला पेज है. अबे यार अच्छा, रोने मत डालो, लिख लो. Conclusion है. अच्छा ना, चलो. Conclusion है, लिख लो. ठीक है. हाँ, ये हो जाएगा इंशाल्लाह. The strategic choice techniques. हाँ. The strategic choice techniques are useful. The strategic choice techniques are useful and the strategic choice techniques are useful and provide results in their specific domains which help the business to choose between different options. However, they cannot be solely relied upon. As for effective strategic management, the incorporation of effective strategic management, the incorporation of strategic analysis, as well as implementation, is really important. The incorporation of strategic analysis and implementation is equally important. अच्छा, एक में हौसला. यहाँ पर हमारा क्या होता है, आंसर खत्म होता है. अब चॉइस में एक बात बता रहा हूँ, एक बात याद रखना, कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें दो ऑप्शंस दिए हुए, कुछ चूज करना है कि भाई ऑप्शन ए के साथ जाऊं या ऑप्शन बी के साथ जाऊं. लेकिन ये वाला सवाल चॉइस का तो था, लेकिन सवाल बोल क्या रहा था, इन टेक्निक्स के फायदे क्या है. तो ये सवाल गौर से पढ़ना. ये अभी मैं पेपर भी चेक कर रहा हूँ ना, भंड यही हुआ है, मांगा ही नहीं है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ. सवाल क्या बोल रहा था कि इन टेक्निक्स की यूजफुलनेस क्या है जब हम ये ऑप्शंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं. अगर ये बोलता फिर हम बताते कि
हर टेक्निक के हिसाब से बता दो कि कौन सा ऑप्शन अच्छा है। हाँ ना, रिकॉर्ड हो रहा है वैसे ही। हो जाए रिकॉर्ड डाल दे तो यार, 4 और गाली और दूंगा पहले बता था भाई, तुम्हें फिर चाहिए नहीं।